to my channel Dave Dharmik. So today blog is started. First, all the new viewers subscribe my channel and press the hit bell icon so you get new updates regarding new travel vlogs in upcoming my channel for more updates. So let's start today vlog. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल. So welcome to Dave Dharmik vlog channel. तो गाइस आज मैं चेस्टर में हूँ. चेस्टर में ये सामने देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर है. लुक एट दिस स्ट्रक्चर. देयर इज वन ब्रिज. इस कैंटिलीवर ब्रिज. I am blogger as well as I am a engineer, so I can show the engineering arts, beautiful arts in the UK, United Kingdom. So there is a cantilever beam. You can see cantilever beam and cantilever bridge. They utilize this structure. Then again there is one gate. You can see level 2. I focus my cam shoot. So there is a two flow of water. The one way water is ongoing and second अरे कहना क्या चाहते हो? way they filter the water. There is a technology for the water treatment plant. So today blog purpose is see the sewage plant and water treatment plant in UK. So again one level 3 block you can see here. Level 3 gate. There is a level 3 which provide unclean water. So that plant work look like that. This is the final gate. It's level 3 gate and final gate. Between that gate आप देख सकते हैं वहाँ पानी है. Look at this dirty water, usage water, and there is some garbages. So we cannot use this water. So for that plant, after using that treatment plant, we reuse this water, recycle water and save the water and save the earth. It is the message for the world. So it's very complicated structure, but here I will explain each and every step in this blog so you can understand as simple as I can explain that every procedure, every gate step by step. तो मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं. तो यही है आज का ब्लॉग गाइस. तो ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग ट्रैवलिंग ब्लॉग विथ इंफॉर्मेशन एंड विथ एवरीथिंग. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. भाई ऐसे ही ब्लॉग बनाता रहेगा. अक्रॉस दिस रोड देयर इज अ वाटर. सो दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस ट्रीटमेंट प्लांट. वी कैन रिमूव the natural water. To water reservoir. So I can see the water reservoir and there is a last point of this treatment plant. So we can visit the last point, final point, water reservoir. So we can know clearly what is the purpose of this project.
So today blog is more for you guys. बहुत मजेदार है, मुझे तो जेन्युइनली ये पसंद आया कॉन्सेप्ट। टू पानी को बचाने के लिए ये अपना पर्यावरण है, पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, वाटर पोल्यूशन है, वो सबसे बड़ा इश्यू है। तो आप देख सकते हैं यही है वाटर रिजर्वायर, इधर ही लास्ट पानी छोड़ते हैं ऐसा क्लीन करके। इससे थोड़ा बहुत वाटर पोल्यूशन में कमी आती है और ग्राउंड लेवल वाटर मेंटेन रहता है इन द सेंस इन द चेस्टर और नियर द एरिया ऑफ द चेस्टर। एंड rain is started, is pouring, so you can't predict UK weathers, but I love the weather. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? Hey guys, ऐसे ही मजेदार बेहतरीन इंफॉर्मेशन with some knowledge, ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग्स रिगार्डिंग द UK मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं शेयर करता रहूँगा। ये बेहतरीन व्यू देख सकते हैं मेरे पीछे, ऊपर वंडरफुल ब्यूटीफुल डार्क स्काई। आई लव दैट सिनारियो। सो वी आर एंड ऑफ द our today blogs. I hope you are enjoying guys too much. Thanks for supporting, thanks for everything. तो दिल से धन्यवाद आप सबको जिसने मेरा वीडियो देखा है यहाँ तक। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलता है कि ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए, तो मैं आगे ऐसे ही वीडियो स्टिल कंटिन्यू कर पाऊँगा। और कमेंट भी करें आपको मेरे ब्लॉग में क्या पसंद आया है, और कुछ भी न भी पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग सब देख पाए। और जो भी देखना चाहते हैं मेरी नज़रिए से ये UK का वेदर और कल्चर, वी कैन एक्सप्लोर एवरीथिंग इन अपकमिंग ब्लॉग्स। तो that's the thing. Enjoy, be happy, enjoy with your family. Bye bye. अरे मैं वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा।